So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are about to start the session and PDF for today's session has been uploaded. You can download the PDF. Okay. So we have to start this session on the earlier note. The reason being that my sessions are going on. So at 11 a.m. I have my session. So I have to wind up this The Hindu session as early as possible. So that's why we have already preponed it, and let's see what exactly is there for us in today's newspaper. So Mohit, Kamran, good morning all. Okay, so let's see what exactly is there for us. देखते हैं हमारे लिए आज क्या खास है. Now this particular report is really important. Now IPCC report forecast a future of severe weather. Okay. So ये आपको मालूम होना चाहिए that Intergovernmental Panel on Climate Change it has released the latest report which is pointing towards the bad situation that we are going to face and especially the country like India. हमारे लिए चीज़ें क्या अलग होंगी? See, you need to understand already if you see the number of poor that we have, poverty, okay, undernutrition and other things. हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं. द पॉइंट इज दैट द क्लाइमेट चेंज एंड द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट आर गोइंग टू फर्दर इंक्रीज द सेवेरिटी. वो सिचुएशन को और सिवियर बना देंगे. सो लेट्स लुक इनटू द फाइंडिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. नाउ ग्लोबल वार्मिंग टू ट्रिगर एक्सट्रीम रेन्स इन साउथ इंडिया. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. ओके, it says that Indian Ocean is warming at higher rate than other oceans. Like this is the latest development. Okay, and India will witness increased heat waves and floodings, which will be the irreversible effect of the climate change. Means it will be part of our life. हमारी life का हिस्सा बन जाएंगे ये heat waves और flooding. Okay, now it is going to lead to an increase in annual mean precipitation, and you have seen इन द रिसेंट ईयर्स आप देख सकते हो कि हमारी जो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट है, लाइक सिटीज ऑन द वेस्ट कोस्ट एज वेल एज ऑन द ईस्ट कोस्ट, दे आर एक्सपीरियंसिंग द हाई प्रेसिपिटेशन. सो यू हैव मल्टीपल एग्जांपल्स. चेन्नई फ्लड, कर्नाटक केरला फ्लड, ओके, देन यू हैव मुंबई फ्लड, and right recently there was flooding in Pune region also, in Maharashtra also right now the flooding is going on. Okay, so you can easily figure it out that how precipitation is increasing and it is going to have a devastating impact on Indian इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटीज, हर जगह जो है नुकसान होगा. बिकॉज इट इज अबाउट द लाइव्स. ओके, जिंदगियां जो है यहाँ पे इनसे इम्पैक्ट होंगी एंड लाइवलीहुड इज ऑल्सो बी इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. सो वार्मिंग ऑफ द ओशियन वुड लीड टू अ राइज इन द सी लेवल. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन कोस्ट लाइन इट इज स्ट्रेचिंग अप टू 7517 kilometers. Okay, now with such a vast coastline and if there is a minimum rise, थोड़ा सा भी राइज होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत भारी पड़ने वाला है. ओके, थोड़ा सा भी राइज अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत भारी पड़ने वाला है. ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट ही है. नाउ लाइक मेजर सिटीज इफ यू सी, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम, 28 million people would be exposed to coastal flooding if sea level rises by 50 centimeter. इतना भी अगर बढ़ता है तो इतने लोगों को नुकसान होगा. Okay, so this is what this report is pointing out, and the point is that okay, are we able to alone, like are we, if we are fighting with this crisis alone, will we be able to solve this climate change issue? आपको एक चीज समझनी होगी, दिस नीड्स एन एफर्ट एट द ग्लोबल लेवल. ग्लोबल लेवल पे आपको एफर्ट करने की जरूरत है. यू हैव टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स हियर. आपको बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ेंगी. सो इट वॉन्ट बी एन ईजी टास्क. सब्सिक्वेंटली इफ यू सी, वेन एवर वी से दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओके, सो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं. नाउ इन पर कैपिटा टर्म्स इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज क्वाइट लो. पर कैपिटा टर्म में हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है कम है. बट द पॉइंट इज दैट इफ यू सी द कॉम्पोजिट, ओके, एब्सोल्यूट नंबर्स, तो वो बहुत ज़्यादा होंगे. तो ये आपको समझना है. इट्स अबाउट द बिहेवियरल चेंज ऑल्सो. वी हैव टू रिड्यूस आर like emissions. We have to recycle things. Okay, there are a lot of things that are to be done. वो चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है. And the point is that for that administration also has to work. Means effort have to be made at the government level, plus it's about the effort from the society. Okay, so civil society, how do they behave, their responsibility, their responsible behavior is also going to help. वो भी जो है definitely यहाँ पे help करेगा. Okay, so we'll move to the next area now. So PM sets out framework for maritime security. Okay, now this is what Prime Minister has, like we are right now, Prime Minister is heading, is a chairperson for United Nations Security Council. Okay, so it's a month-long presidency, and like there are a lot of debates, and presently debate is around the maritime security. Now why this debate is important?
So if you see what China is doing, China is creating artificial islands. वो वहाँ पे जो है artificial island जो है बनाए जा रहे हैं South China Sea में, and China is not ready to accept the international law. So you have something called United Nations Convention on Law of Seas. Like this establishes the legal framework for maritime activity, but China is not ready to accept it. They are saying that okay, when these laws were framed, we were not discussed. हमसे जो है चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया था. ऐसा जो है चाइना बोल रहा है. Okay, but the point is that with such irresponsibility, how can you run the whole world? पूरी दुनिया कैसे चलाई जा सकती है? The second biggest economy is acting in an irresponsible manner. Okay, so that's why this debate is important, and definitely we want an international cooperation specifically for the freedom of navigation. Now why this freedom of navigation is important? हमारे लिए क्यों important है freedom of navigation? So when you talk about freedom of navigation, the point here is that your 90% of your merchandise trade by volume. Okay, अगर हम volume की बात करें, 90% of your trade is going through द सी लेन्स के थ्रू ही जो है आपका ट्रेड जा रहा है. ओके, सो दैट्स वाई वी हैव टू प्रोटेक्ट आर सी लेन्स. ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट ऑन दिस पेज देर इज नथिंग मच. डायरेक्टली लाइक वी विल मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. सीधा एडिटोरियल सेक्शन चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास वहाँ पे. ओके, सो हेयर वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द एडिटोरियल सेक्शन. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस ऑन दैट एडिटोरियल section. Other than that, in between, there is nothing much. Now, this first editorial is about Saudi Arabia, Iran, and the possibilities of this detente. Okay, the idea is that Saudi Arabia and Iran, if you see, traditional enemies. Okay, they are traditional enemies because of the sectarian divide within the Muslim, you know, ulma. Okay, उनके बीच में जो है sectarian divide है. Like Iran is Shia dominated, Saudi Arabia is Sunni dominated. Okay, the point here is that recently there were some developments regarding that both are exploring closeness, कि कैसे जो है हम अपने disputes को हटाएं, कम करें. both were exploring some ways. Okay, तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने point out की है that how situation is changing, how new things are coming up. Now recent pronouncement from Riyadh and Tehran could be supportive of peace and security in the Gulf littoral. This is a really good development if there is peace in that region. See, you need to understand that region. If you see, like it is important for the global economy, the whole, you know, oil वहाँ से आ रहा है पूरी दुनिया का. if there is some political instability, कुछ भी political instability वहाँ पे होती है, it is going to further aggravate the crisis for the whole world. पूरी दुनिया के लिए crisis हो जाता है. Now Persian Gulf is nearly 990 kilometers long, like it's a water body that separates Iran from the Arabian Peninsula. Okay, and this is how the situation is, and the region is important. शांति जितनी हो सके उतनी अच्छी है. Okay, now Iranian revolution of 1978 and 79 disturbed the strategic balance in the region. Now this revolution was on the sectarian lines, means religious revolution आप इसको बोल सकते हो. The government that was established, okay, after that was basically a religious government. तो वहाँ पे religious government वहाँ पे establish हुई. Okay, means religion upholding the religious principles and all, it was important for them, और वो चीज़ यहाँ पे आ गई. Now how this equation changed the whole scenario. Now Saudi Arabia, definitely they would have looked for some security, उनको भी security चाहिए थी. Okay, then they try to have close relationship with United States, so US का रोल वहाँ पे बढ़ गया. But the point here is that in the recent years US is moving out of the region. US इस एरिया से अपना ध्यान कहाँ शिफ्ट कर रहा है? पैसिफिक ओशियन के अंदर. Okay, so US wants to counter China. So this is the new development. Okay, now you need to understand, in 1996 Iranian president Mohammad Khatami told the Saudi defense minister that defense pact would be mutually benefit. So this is not the first time both the countries are exploring peace. Past में भी वो peace explore कर चुके हैं. Okay, so they are mentioning about the 1978-79 situation. Okay, now this was seen in Tehran as a good beginning for removing the misunderstanding. Okay, and recently also whatever is happening, it's a good development. Both countries are realizing that they have to live with peace. Okay, at the end of the day this world cannot afford another war. एक war जो है बड़े level पे हम afford नहीं कर सकते. The point here is that both have been fighting with the proxies. Okay, तो सीरिया की बात करें या हिजबुल्ला की बात करें या येमेन की बात करें, okay, तो दोनों का पेशेंस थोड़ा कम होता जा रहा है. नाउ येमेन के अंदर इफ यू टॉक अबाउट हाउदी रिबल्स आर बैक्ड बाय ईरान, और वहाँ पे सऊदी जो है वो येमेन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. नाउ दे हैव रियलाइज दैट लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग दैट वॉर, उसका नुकसान ज़्यादा होता है. ओके, सो देर आर की इशूज लाइक इन लास्ट फ्यू ईयर्स हैव विटनेस्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द गल्फ रीजन. Most states have been affected adversely by the historical low oil prices and by COVID-19. Okay, so this is the new development. The GCC has become inoperative with the focus on boycott of Qatar
दैट इज नाउ बीइंग रिवर्स्ड। तो ये चीजें कुछ एक सुधारने की तरफ जा रही हैं। ओके, नाउ देयर आर न्यू टेंशंस बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। दिस इज न्यू डेवलपमेंट बिकॉज सऊदी अरेबिया हैज साइंड अब्राहम रिकॉर्ड अकॉर्ड विद इजराइल। ओके, यूएई नो यूएई हैज साइंड अब्राहम अकॉर्ड विद इजराइल, और वहां पे बहरीन के साथ जो है वो पीस की तरफ आगे जा रहे हैं। नाउ सऊदीज दे माइट नॉट लाइक दिस। ओके, सऊदीज जो है उनको ये ज्यादा पसंद नहीं होगा। सी आई एम अगेन पॉइंटिंग आउट देयर वाज अ स्लिप ऑफ टंग। सो यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड जो है इट वाज साइंड बिटवीन यूएई इजराइल एंड इट वाज फैसिलिटेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट था एंड दे आर लुकिंग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। नाउ इजराइल अगेन इज एन इंपॉर्टेंट एंटिटी हियर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट एंटिटी है बिकॉज अर्लियर यूएस वाज द सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर देम। यूएस इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, अब यूएस इज नॉट इंटरेस्टेड, सो इजराइल विच इज हैविंग अ टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स जो यहाँ पे काफी हेल्प कर सकते हैं अदर अरब कंट्रीज की। नाउ मोर रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन टू विड्रॉ फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड रिड्यूस कमिटमेंट इन इराक हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन ऑन पॉलिसी ऑप्शन अमंग knowledgeable observers in Washington. Okay, especially these things are also discussed with the वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये गल्फ कंट्रीज हैं वो भी ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशन इजराइल। ओके, सो ये चीज समझ रहे हैं बिकॉज ट्रेडिशनल एनिमी, इफ यू टॉक अबाउट ईरान इज द ट्रेडिशनल एनिमी एंड इसराइल के साथ तो फिर भी एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं कि शांति कैसी लाई जाए। ओके, नाउ the point here is that another view is that the post COVID-19 environment is going to be unfriendly to Saudi Arabia. Okay, ऐसा भी होने वाला है। Now Saudi Arabia's like it is failure to subdue the Houthis and to close Yemen conflict, again it's an issue, still the conflict is on, कोई शांति वहाँ पे नहीं हुई है। Further, Iran US inability to subdue the Iran on terms have been become evident. Iran is also going ahead with its nuclear program, वो भी आगे बढ़ रहा है, और यूएस ने जो भी प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो सब काम नहीं आ रहा है। वट एवर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस दैट दे हैव पुट इन, कुछ भी काम नहीं आ रहा है वहाँ पे। ओके, सो ये चीज आगे बढ़ रही है। नाउ द पॉइंट इज दैट इन दैट एनवायरमेंट there is a realization within the Saudi Arab also that you have to establish some peace, you have to explore some peace with Iran. Okay, और उसी तरफ ये आगे बढ़ रहा है। now this region is important for your hydrocarbons, बहुत ही important region है exports के point of view से। if there is some security issue or political crisis in the region, it is going to have an impact on the whole world, but ये चीजें इतनी आसानी से होंगी नहीं। so there are some essential ingredients that are to be looked into. now first is that like there should be freedom of access to an outlet from the state of Hormuz. okay, so पर्शियन गल्फ की एंट्री जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से होती है एंड वहां पे जो है एंट्री एग्जिट जो है वो एकदम फ्रीडम के साथ होना चाहिए, देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल शिपिंग इन द इंटरनेशनल वाटर्स इन पर्शियन गल्फ, ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। प्रिवेंशन ऑफ कंफ्लिक्ट दैट मे इंपिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड शिपिंग। ओके, यू हैव टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं एमिकेबली ट्राई टू रिजॉल्व देम, जितनी जल्दी हो सके शांति से उनको सॉल्व कीजिए। नाउ फ्रीडम ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ गल्फ लिटोरल्स टू एक्सप्लॉइट देयर हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर रिसोर्सेज एंड एक्सपोर्ट दम। ओके, तो जितने भी छोटे बड़े कंट्रीज हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड देयर कैपेसिटी, उनको जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड दैट यू हैव टू एक्सप्लोर पीस एंड स्टेबिलिटी इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स। ईच एवरी स्टेट इज इंपॉर्टेंट, सब जगह शांति होगी तभी कलेक्टिव शांति की आप बात कर सकते हो। दिस इज व्हाट हैज बीन पॉइंटेड आउट इन दिस एडिटोरियल। सो नाउ वी विल मूव अहेड, आगे चलते हैं। ओके, देखते हैं अगले एडिटोरियल में क्या है। नाउ शेकी फाउंडेशन ऑफ लेबर लॉ रिफॉर्म्स। ओके, रिसेंटली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सम ऑफ द कोड्स, बहुत कोड इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, बट नाउ दे आर हाईलाइटिंग, दिस एडिटोरियल इज हाईलाइटिंग हाउ सिचुएशन इज डिफरेंट। ओके, सो वट एवर गवर्नमेंट इज सेइंग द ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट फॉर दैट फ्रॉम दैट। सो दिस इज वट हैज बीन पॉइंटेड आउट हियर। नाउ द गवर्नमेंट दे ब्रॉट सम कोड wages like codes and all. So code of wages are there. Okay, 3 codes are there, like industrial relation code, occupational safety code, okay, health and working condition code, code on social security. Now all these codes have been brought in. Okay, ये सारे code government ने as a labor reform point से लाए हैं। Now what they are pointing out that these rules have been made but it has been implemented incompletely, अभी भी incompletely implement हो रहे हैं। why it is that? see, you need to understand, according to these codes state government also have some role. okay, so till the time state governments are not going to notify it, चीजें नहीं होंगी, वो लागू ही नहीं होंगी। it will be just a draft हाथ में लेके क्या करोगे when it has no ground level implementation। okay, so a rushed exercise that they are pointing out, like
controversies around the process of enactment of the code and framing of the rules. Okay, government has also only symbolically and partial consultation, कुछ खास consultation किया नहीं गया था trade unions के साथ. Okay, so again it's a top down approach. Definitely top down approach is not going to work. Top down approach जो है इतनी अच्छे से नहीं चलती है. ठीक है, गवर्नमेंट अपने ऊपर से impose कर रही है without having consultation, the way they did with the farm laws. जैसे farm laws बिना consultation के इन्होंने लागू किए हैं, वैसे ये codes वगैरह भी लागू कर रहे हैं. And again the question will be on the implementation. Okay, now 3 codes were passed in parliament. Okay, and there was some opposition also. Opposition भी इसको बात कर रहा था. It announced its intention of implementing codes from April 1, 2021, even as state governments were completely unprepared with the rules. Now, as I told you, state government को भी यहाँ पे act करना जरूरी है. तो अगर आपकी state government prepared नहीं है, they are not notifying the rules, तो वो code लागू ही नहीं होगा. Okay, so the major political parties reallocated their energies to regional elections rather than the implementation of the code. So political parties उनके दिमाग में elections चलते हैं and implementation of the code is at the back end. Okay, ये अभी भी वो seriously नहीं ले रहे हैं. Now labor law reforms have been affected and the government can boost of it. Okay, ये एक तरीके से चल रहा है, projection, media projection and all that, they have done this reform and all. But the point here is that it is more symbolic. Okay, it is more symbolic and it doesn't have a substance. Now you need to understand, government has deferred the possible date of implementation to October 1, 2021. Okay, why it is so? Because Supreme Court of India has exerted pressure on both the central and the state governments to implement one nation one ration card scheme and register all the unorganized workers under the national database for unorganized workers. Okay, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है. ठीक है ना. द गवर्नमेंट एजेंसीज आर रशिंग टू कंप्लाई विद बोथ द डायरेक्टिव्स. उनके पास टाइम ही नहीं है बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए. So right now their focus is on, okay, their primary focus is on this, like they are working on one nation one ration card. आधार की बात हो रही है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर एट द बैक बेंच. ये कोड इंप्लीमेंटेशन थोड़ा बैक बेंच पे चला गया है. ठीक है ना. अगेन रिसेंटली देयर वाज क्राइसिस रिलेटेड टू माइग्रेंट वर्कर्स आल्सो, कोविड क्राइसिस एंड ऑल. सो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजी इन समवेयर एल्स. सो गवर्नमेंट डिडंट ऑनर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है. ओके, नाउ इफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लाइक यू डोंट हैव एनी रिकॉर्ड विद यू, आपके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है, सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द पॉलिसी फॉर्मेशन. डेफिनेटली योर पॉलिसी फॉर्मेशन विल नॉट बी रियलिस्टिक. ओके, सो वन इज नॉट श्योर व्हेन गवर्नमेंट वुड comply fully or well with the Supreme Court's orders. Okay, now unorganized workers including migrant workers will continue to be deprived of their promised and extended entitlements. ये प्रॉब्लम होगी. इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, इट मीन्स दैट दे विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द फॉर्मल डेफिनेशन. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, फॉर्मली उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा. नाउ थिंग्स विच आर नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज, आप उसको कैसे जो है उसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे जो है आप उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे अगर कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द डिफरेंस, लाइक गवर्नमेंट्स लाइन वर्सेज रियलिटी. नाउ गवर्नमेंट सेड दैट कोड्स वुड extend universal minimum wage and social security and enable enhanced in industrial safety and all. Okay, ये चीज उन्होंने बताई, but ground reality is different. Now industrial relation codes provide for recognition of trade unions by the employers, a labor right that eluded workers for 7 decades. On the other hand, employers celebrated the extension of tremendous flexibility to them. Okay, now employers के हाथ में ज़्यादा flexibility है अब कि वो allow करेंगे कि नहीं करेंगे trade union बनना. Okay, this is the new development. This is the new development. How it is going to benefit, अब इसके बारे में कोई clarity नहीं है. Now it was a real revelation to find that major states such as Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Maharashtra, Haryana, Delhi not issued the draft rules. उन्होंने कोई कोड वगैरह के रूल्स वगैरह इशू नहीं किए हैं. Even states like Karnataka, Gujarat, Jharkhand, they have framed rules for code on wages. पूरा जितना करना चाहिए था उतना तो उन्होंने भी नहीं किया. Okay, now Madhya Pradesh, Chhattisgarh, UP, Punjab have framed rules for all code. Okay, even though code on wages was enacted in 2019, it was only in March 2021 that the central government notified the constitution of advisory committee. Now the point here is that you are going to frame the rules, but जब तक आप notify नहीं करोगे वो लागू ही नहीं होते. अब आपने 2019 में बनाए और 2021 के अंदर आप उसे notify कर रहे हो. Okay, this shows the will of the government कि सरकार कितनी जल्दी इसको करना चाहती थी. Now you need to understand there is a question mark over the safety of workers. Okay, so this has been pointed out. Major accidents इंडिया में हुए हैं, killing 75 workers recently. Okay, मई to जून के बीच में. Now
Media is also pointing out few things. Now there are some disturbing picture of industrial accidents in automobile industry in Gurugram region. वहाँ पे भी काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं. So industrial safety it continues to be a grave concern. ये grave concern है आपके लिए. बट द पॉइंट हियर इज दैट यू हैव इनेक्टेड अ लॉ. अब उसका करोगे क्या? ओके उसका करोगे क्या अगर स्टिल कंसर्न हैज नॉट बीन एड्रेस्ड? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अनदर थिंग लाइक according to the several research, COVID-19 has led to the withdrawal of workers from the labor market. Okay, so they are moving back to their rural area. तो इससे जो है इनइक्वालिटी जो है बहुत बढ़ गई है. Now further the non statutory floor level minimum wage remains at 178. ये कुछ ज़्यादा नहीं है. ओके 178 रुपीज़ पर डे. ये कुछ ज़्यादा नहीं है जो आप फ्लोर रेट लेके चल रहे हो. नाउ गवर्नमेंट्स रिलीफ मेजर्स टू वर्कर्स स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड एंड माइग्रेंट वर्कर्स एंड इवन टू द सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर टू मेगर टू मेक एनी डिफरेंस. कुछ खास डिफरेंस होने वाला नहीं है वट एवर गवर्नमेंट इज प्रोमिसिंग. दिस हैज बीन पॉइंटेड आउट हियर बिकॉज इट इज गोइंग टू इनएडिक्वेट. रिक्वायरमेंट देखो इस देश की क्या है और कितना हम कर रहे हैं वो बिल्कुल इनएडिक्वेट है. 178 रुपीज़ पर डे. ओके क्या इतनी होनी चाहिए फ्लोर रेट? Now provide legal visibility to millions of unorganized and migrant workers even after decades and despite direction by the highest court. कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के बावजूद जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है. दैट्स द पॉइंट हियर. ओके सो ये समस्याएं हैं कुछ जो हमारे देश में चल रही हैं. अदर देन दैट वी आर गोइंग टू कवर दिस एडिटोरियल इन डिटेल द सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक्स. ओके सो ये हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे. सो इसको देखते हैं. नाउ देर इज वन सजेशन दैट इंडिया प्लास्टिक पैक्ट. Okay, this is the suggestion that we can have this pact and it is going to benefit the society and economy and the environment. Okay, so Confederation of Indian Industry has been long at the forefront of addressing the issues challenging the well-being of the society and climate change और plastic waste उसमें एक major issue आज की डेट में चल रहा है. ठीक है ना, major issue आज की डेट में चल रहा है. Now a report, okay, it suggests that by 2050 greenhouse gas emission for plastic could reach over 56 gigatons. इतना ज़्यादा जो है ये बढ़ने वाला है. Okay, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. ठीक है ना, तो रिपोर्ट हमें कह रही है बहुत ही खतरनाक चीज. ओके इतना ज्यादा ये बढ़ने वाला है. हाउएवर व्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ लाइवलीहुड like post consumer segregation, collection and disposal of plastics, it can make about half of the income of 1.5 to 4 million waste pickers in India. So there are a significant section of people who are dependent on it. Okay, जो काफी हद तक इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है. अब ये अपने आप में एक चीज है. ओके they are dependent on it. ठीक है ना. A 2021 report commissioned by Google, like closing the plastic circulatory gap, suggests that unless large-scale global intervention are made, we should expect to mismanage more than 7.7 billion metric ton of plastic waste. इतने के राउंड जो है हम मिसमैनेज कर रहे हैं. दिस इज द रियलिटी. ओके दिस इज द रियलिटी एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ऑल. नाउ यू नीड अ मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी एंड सिस्टमेटिक okay way forward things are required. So one of the suggestion is plastic pact model. This is seen as a solution कि आप इसे करें और यूके साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से ये आया है. Now plastic pacts are business led initiatives and transform the plastic packaging value chain for all formats and products. Okay, so ये एक business model इस तरीके की लाने की बात है कि इस तरीके का plastic pact हम करेंगे. Now all pact unite behind 4 targets to eliminate the unnecessary and problematic plastic packaging through redesign and innovation. Another point is that to ensure all plastic packaging is reusable and recyclable. Another is to increase the reuse, collection and recycling of plastic packaging and to increase the recycled content. Okay, so ये major area है जिसके पर हम focus कर रहे हैं plastic pact के अंदर. Now India Plastic Pact, the first in Asia, will be launched in September. Okay, now it can be expected to boost the demand for recycled content. काफी ज़्यादा बढ़ेगा, jobs और create होंगी यहाँ पे. Okay, so you have an example of UK Pact that helped channel over 120 million pound. इतना investment इसके अंदर आया है. ओके ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. इन सब्सिक्वेंट वे इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा. नाउ पैक्ट विल सपोर्ट द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क. ये गवर्नमेंट का आइडिया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क. ओके विच इज ऑल्सो एनविजन्ड इन योर स्वच्छ भारत अभियान. नाउ इंटीग्रल टू द पैक्ट फ्रेमवर्क इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर क्रूशियल टू द पोस्ट कंज्यूमर सेग्रीगेशन. ओके अब ये चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर का भी यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंस दिया है और ये चीज़ आपको लागू करनी चाहिए. ओके बिकॉज रैग पिकर्स एंड ऑल देयर सेफ्टी, वो सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी. ओके नाउ India Plastic Pact focuses on solution and innovation. Members' accountability is also ensured through ambitious target and annual data reporting. Okay. Now, Pact will develop a roadmap for guidance
like form action group and all these things will be done. Many Indian businesses and organizations have expressed an interest in signing up this pact. Like deeper and long lasting benefits will be felt अक्रॉस द सप्लाई चेन्स ओके हर जगह जो है इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा बिकॉज बिजनेस हाउसेज दे आर कमिंग टुगेदर एंड डेफिनेटली इफ यू आर कमिंग आउट विद अ बिजनेस मॉडल किसी भी चीज से अगर आप बिजनेस मॉडल ही प्रोड्यूस कर देते हो तो ये सबको बेनिफिट करता है सोसाइटी को भी और इकोनॉमी को भी ओके सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ आगे चलते हैं लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस नाउ ग्लेशियर्स विल कीप श्रिंकिंग दिस इज व्हाट आईपीसीसी रिपोर्ट इज सेइंग ओके सो हिंदू कुश हिमालयन रीजन के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं दे आर गोइंग टू बी इंपैक्टेड बाय इट ओके मेजर इंपैक्ट होगा यहाँ पे एंड इरिवर्सिबल इंपैक्ट होगा फर्दर यू नीड टू अंडरस्टैंड माउंटेनियस रीजन्स के अंदर जो है जो फ्लडिंग है लैंडस्लाइड है आउटबर्स्ट जो है लेक आउटबर्स्ट ऑल दीज केसेस आर गोइंग टू इंक्रीज एंड वी आर सीइंग दिस आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है सो राइजिंग टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन कैन इंक्रीज द अकरेंस ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ओके सो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं ठीक है ना ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं okay so these are important things here now government directed to like submit a report on oxygen supply this is another news okay so court appointed a national task force to augment secure and streamline the manufacture allocation and supply of medical oxygen okay now government also place like ये have to provide the report इनको जो 12 member जो कमेटी बनाई थी टास्क फोर्स बनाई थी उसके अंदर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी देना पड़ेगा so union of india has to assure that recommendation have been acted upon at the enhanced level for the future okay ये चीज करने की जरूरत है now this was formed by the court during the peak days of second wave of pandemic okay ये एक चीज थी because there was some unscientific ways in which the resources were allocated okay medical oxygen number of beds in hospitals उसको लेके कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया आपके यहाँ पास नहीं था सो दिस वाज अ कोर्ट इंटरवेंशन ओके सो कोर्ट ने सोचा कि उनको इंटरवीन यहाँ पे करना चाहिए एंड दे इंटरवीन्ड इन इट ओके उन्होंने इंटरवीन किया now another news which is important is related to the 11,000 crore for self sufficiency in edible oil production this is what government is going to do now center is going to spend 11,000 crore okay self sufficient बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है because edible oil की अगर हम बात करें we are importing a lot okay बहुत import हम करते हैं and it is going to have an impact over your जो आपका जो बैलेंस है ट्रेड बैलेंस वो कंप्लीटली भी बिगड़ जाता है यहाँ पे ओके सो ये चीज यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट की है नाउ we'll move to next part now let's see what exactly is there for us okay we have covered these particular news okay ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं other than that on in this particular session like we'll move to the international page now Taliban again presses on okay continues to capture more cities still there is a struggle going on over there चीजें जो है ठीक नहीं हो रही हैं यहाँ पे further climate change must be the death knell for the fossil fuel okay so this is the time that we should realize as a world we should realize that you have to give up the fossil fuel and you have to move to the renewable energy okay तो ये आपको यहाँ पे डेफिनेटली करने की जरूरत है ठीक है ना लेट हो जाए उससे पहले आप इसको ठीक कर लीजिए okay this is what have been pointed out here now Australia signals democracy's trade swing from China to India देखो China was blackmailing Australia ऐसे cases आए हैं that's why it's an important thing that world over there is a realization that you have to diversify your model okay आपको जो है चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस खत्म करनी है and they are looking for reliable partners and definitely they are looking for the democracy so India is a good democracy और इंडिया एक अच्छा ऑप्शन भी यहाँ पे जो है वो देता है इनको सो डेफिनेटली वी हैव टू वर्क ऑन इट यू हैव टू इंप्रूव योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखो चाइना से बिजनेस ऐसे नहीं आएगा आपको ईओडीबी भी बेटर करना पड़ेगा ठीक है ना सो दिस हैज बीन पॉइंटेड आउट हियर अदर देन दैट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज देयर इज नथिंग मच कुछ खास यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ओके सो दैट्स इट फॉर द डे थैंक यू वेरी मच